All right. So yesterday we started by discussing what matter is. We said that it has mass, it occupies space, and space is what will change when you go from one state of matter to another. Mass does not change. So in solid, you have very limited space that the matter is going to take, and in gas, you have a lot of space. In fact, most of it is actually just the distances between particles. And we'll get to that, what exactly is a particle. And these are some things that we have seen और जो हमें जिंदगी में भी हमने देखा है किसी भी लिक्विड के साथ हमने देखा है कि वो फिक्स शेप तो नहीं होती है उसकी लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है अगर आपके पास एक 250 मिलीलीटर्स का एक ग्लास ऑफ वाटर है तो ये नहीं हो सकता कि आप उसको एक 1 लीटर की बॉटल में डालें और वो पूरी 1 लीटर की बॉटल को फिल कर दे बिकॉज वो 250 है वो 250 ml ही रहेगा इट विल नॉट फिल द होल थिंग because its volume is fixed, but its shape will not be fixed. You take a bottle that's a very intricately shaped, or you take a bottle that's nothing but जिस तरह की मेरी जिंदगी में drawing रही है उस तरह की बनाई हुई है किसी ने. So it will just be the same shape of whatever the container is. The solid doesn't flow, ice will not flow, but water in a liquid form will flow. You cannot compress it, and it will have density which is different from that of solid. Now, water is a unique thing because water has higher density than ice. And we study in A levels why that is. But in other solids, most of them, we will see that solid की density high होती है और gas की density low होती है. Water के case में ऐसा नहीं है, but उसकी scientific reasons हैं which we won't get into at this stage. Okay? And that is the reason that it floats, the ice. वो float करती है, but water में, water मतलब सिंक करता है और आइस उसके अंदर फ्लोट करती है ऑफ कोर्स हमारी जिंदगी भी इसी वजह से है बिकॉज आवर डीएनए हैज द सेम द वे इट इज एग्जैक्टली द सेम रीजन फॉर व्हाई आइस फ्लोट्स बट अगेन लेट्स कीप दैट फॉर ए लेवल्स देन वी टॉक अबाउट गैस लॉज एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गैस लॉज बिकॉज अगर आपको गैस का बिहेवियर पता है आपको उसके ऑपोजिट में सॉलिड और लिक्विड का भी बिहेवियर पता चल जाएगा सो हमने बॉयल्स लॉ की एग्जांपल ली थी कि बॉयल्स लॉ कहता है that pressure multiplied by volume for the same temperature same रहना चाहिए तो वो इक्वल हो जाता है मतलब अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्विमिंग पूल के बॉटम पे एक बबल है और वही एयर बबल अगर सरफेस पे आता है सो प्रेशर चेंज हो रहा है तो उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो रही है बट टुगेदर दे मल्टीप्लाई टू गिव यू द सेम वैल्यू सो अगर वो बॉटम पे 2000 है तो वो टॉप पे भी 2000 ही रहेगा एंड यूजिंग दैट वी फाउंड द वॉल्यूम नाउ एन इंपॉर्टेंट रिलेशन थिंग or important thing to remember here is that in chemistry, and this is in particular for ATP, physics में भी ये चीज apply होती है. There are two kinds of variables. There is a variable that is called independent variable. There is a variable that's called a dependent variable. And there's a third one which is called a control variable. जब भी आप कोई experiment करते हो ना, आप dependent का independent से relation figure out करते हो. Independent is the one that will be on the x-axis when you draw a graph, and it is in your control. The dependent variable is going to be drawn on y-axis, and it comes as a result of experiment. And control variable is what is constant, what does not change. क्यों change नहीं करते हम? क्योंकि हम इन दोनों का आपस में relation देखना चाहते हैं. हम ये नहीं चाहते कि उसके रिलेशन को कोई तीसरी चीज इन्फ्लुएंस करे सो अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी लेट्स सपोज आपकी कार है और आप देखना चाहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल द कार गो फॉर 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इसको माइलेज भी बोल सकते नाउ इन दैट केस द 5 लीटर थिंग इज इन योर कंट्रोल आपकी मर्जी आप 5 डालें 10 डालें पूरी टैंक फुल कर लें दैट्स इन योर कंट्रोल बट हाउ लॉन्ग द car will travel on that's not in your control. वो गाड़ी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है गाड़ी के इंजन पे डिपेंड करता है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल वो आप कंट्रोल नहीं करेंगे आप कंट्रोल करेंगे कि आप कितना फ्यूल ऐड कर रहे हैं एंड देन द कंट्रोल्ड वेरिएबल जो चीज आपने चेंज नहीं करनी है वो ये है कि भाई अगर आप 5 दफा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपने 5 दफा सेम गाड़ी को चेक करना है ये नहीं हो सकता कि आज आप अपनी गाड़ी की माइलेज देखें कल आप अपने नेबर की गाड़ी की माइलेज करें और कहें कि क्या बात है गाड़ी बड़ी जबरदस्त चल रही है भाई वो आपकी गाड़ी थी नहीं सो यू हैव टू मेंटेन सम थिंग्स एज द कांस्टेंट थ्रू आउट योर एक्सपेरिमेंट सिमिलरली
how fast or slow you drive the car will be important in this case. कि आप गाड़ी को, ठीक है, गाड़ी लेट सपोज 5 लीटर्स में 100 किलोमीटर्स कर रही है, बट वो कैसे कर रही है? मे बी आप ड्राइव उसको 50 की स्पीड पे कर रहे हैं, आप उसको 100 पे लेके नहीं जा रहे हैं. सो दैट इज अ कॉन्स्टेंट थिंग, ताकि आपका एक्सपेरिमेंट फेयर हो, ताकि आप कंपैरिजन फेयर कर सकें. So in any study, you will need to look at the independent variable and the dependent variable. So let me take the example of magnesium that you add to HCl. Now, when you add magnesium to HCl, hydrogen gas is going to come out. Will be some bubbles. वो तेज होंगे, slow होंगे, depending on multiple factors that we will study later on. But इसके अंदर, what do you think is the independent variable? Sir, the amount of magnesium that we very good. Very good. Now, amount of magnesium in chemistry means moles. Mass of magnesium will mean grams. So, दोनों आपके कंट्रोल में. तो आप किसी एक को देख लोगे. आप moles की बात भी कर सकते हो, आप mass की बात भी कर सकते हो. But both of those will be in your control, and that will be the independent variable. So, before you do the experiment, you will measure the mass of that magnesium. Okay, so that's going to be the first thing you do. तो उसको measure किस तरह से करोगे? What equipment will you use for this? Sir, we can use maybe a balance, maybe a top and balance. So we can use an electronic balance. We will always use an electronic balance. Top and balance पुराने ज़माने में होता था, अब हम नहीं करेंगे उससे use. अच्छा, now the gas is going to come out, and depending on whatever you have done with the magnesium, आप उस गैस के बबल्स को कलेक्ट कर सकते हो. अब वहां पे आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. कैन एनीबॉडी थिंक ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन दैट केस? सर, हाइड्रोजन गैस में भी हाइड्रोजन गैस तो है, बट द नंबर ऑफ बबल्स कुड बी 1, लेकिन उसको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. वी कैन थिंक ऑफ अ ब्रॉडर थिंग लाइक volume of gas could also be something that you can measure, right? Or you can also measure the time it takes for you to collect 50 cm cube of that gas. वो भी आप कर सकते हो. वो भी in this case will be the dependent variable, because that's not in your control. You are controlling how much magnesium you add. Similarly, there will be some things that you will not change throughout the study. So for example, how hot the magnesium and the acid is. वो आप चेंज नहीं करोगे. सिमिलरली हाउ बिग द साइज ऑफ द मैग्नीशियम पार्टिकल इज, वो आप चेंज नहीं करोगे. अगर आप देखना चाह रहे हो कि मैग्नीशियम कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस देता है, आप ये चेंज नहीं करोगे कि मैग्नीशियम की प्योरिटी क्या है. आप ये चेंज नहीं करोगे कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है. एवरीथिंग एल्स दैट कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स, यू विल मेक इट कांस्टेंट, यू विल कंट्रोल इट, एंड दैट इज हाउ यू विल नो कि अच्छा, how does the amount of magnesium affect the volume of gas that I get? So in this case, you have two variables, and remember, variable should be measurable. कभी भी आपको ATP में अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन का बोलेगा, तो आपने ज़हन में रखना है कि जो भी चीज मैं मेजर करूंगा वही वेरिएबल हो सकती है. अगर कोई चीज मेजर नहीं हो सकती, वो वेरिएबल नहीं हो सकती. ठीक है? सो आप ये नहीं कह सकते कि मैग्नीशियम वेरिएबल है. Mass of magnesium is a variable. Volume of that gas that you get is a variable. The amount, the moles of magnesium is a variable. Khali magnesium keh dena is not a variable. Now, in this case, when you talk about Boyles law, the thing that is in your control is the volume. And the thing that's changing as a result of that is the pressure. And Boyles law works both ways. So अगर आप pressure बढ़ा रहे हो तो volume कम होगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम होगा. वो दोनों सूरतों में आप तो एक को आप डिपेंडेंट लेते हो, एक को इंडिपेंडेंट लेते हो. अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस वुड बी, आप एक सिरिंज लो, उसमें गैस आपने ट्रैप कर लिया, लेट्स सपोज. आप जब उसको स्क्वीज करोगे, उसका प्रेशर बढ़ेगा, और जब आप उसको रिलैक्स करोगे तो उसका प्रेशर कम होगा. द गैस विल एक्सपैंड एंड दैट मींस प्रेशर विल बी लेस. वी यूज एन आइडियल गैस इक्विपमेंट इन द लैब, जो हम कर सकते हैं. I'll make a video on that for you to watch as well. Okay, so in this case, if you're changing the volume, that's your independent variable, and if you're seeing how the pressure changes, that's your dependent variable. But everything else, like temperature, the amount of that gas, everything else should be controlled.
सिमिलरली चार्ल्स लॉ में हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो आप टेम्परेचर को अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो, सो दैट विल बी मेजर्ड यूजिंग द थर्मोमीटर, और फिर प्रेशर उसके रिजल्ट में इंक्रीज करेगा, एंड सेम फॉर द अदर टू. So that's how you can study the effects of this. All of that is good, but today I want to move on to seeing कि ये जो solid liquid gas है ये आपस में change कैसे होता है. And by the way, अभी तक मैंने particles की बात नहीं की है, and you should also be able to explain all of whatever we have studied so far without resorting to the explanation of particles, because ये सब जो है ना ये लॉज हैं, ये हाउ है कि कैसे बिहेव करती है कोई चीज. हम वाई पे नहीं गए हैं. क्यों ऐसा होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट, एंड वी हैव आंसर्स फॉर दैट. Scientists have worked really hard to get those answers, and it took them around 2000 years to do that. So now we want to look at how particles change from one state to another. So we have 3 different states जिनको हम स्टडी करते हैं. They're not actually the only states, but 3 that we study. And particles can change from one to another. So I'm going to obviously make 6 arrows for this. So I'm going to have one over here, जो कि gas से liquid जाएगा. Similarly, another one over here, जो gas से solid जाएगा. Similarly, the opposite one is also there. So कोई चीज gas बनती है from solid. Similarly, you can have something becoming a gas from the liquid. And you can have liquid that will become solid. All of these processes, they have names. So quickly tell me, what is solid to liquid process? Melting. Melting, yes. And liquid to solid? Freezing. Freezing, very good. So liquid to solid is freezing. Okay. Liquid to gas? Boiling. There's another one which is evaporation, but उस पे मैं अभी आता हूँ. They're both liquid to gas, but that's the only similarity that they have. Similarly, solid to gas, that's called sublimation. The converse from gas to solid is called deposition, and from gas to liquid is called condensation. Now, all of that can happen, and it does happen. Or one thing that people have seen is that you can plot temperature against the states. So अगर मैं किसी चीज को लूं, किसी एक चीज को लेता हूं, I'm going to control the thing that I'm studying. So let's say it's just ice or it's a piece of iron. किसी भी चीज को मैं ले सकता हूं. And I'm going to measure its temperature. And I'm going to provide it heat. Now, I want to see how long it takes it to melt and at what temperature it does it. So मेरा independent variable क्या होगा इस केस में? It will be the time that it takes for it to melt. क्यों? क्योंकि मैं time जो है वो मेरे कंट्रोल में, मैं कब melting start कर रहा हूँ. So वो मेरा x axis पे होगा और उसको मैं लिखूंगा t, small t, with s as my unit. Now, the way to write this is कि आप slash के साथ unit लिखते हो. Another way to do that would be कि आप bracket में s लिख दो. But remember, the unit for temperature is second, and that is written as s. SEC नहीं होता या कोई और symbol नहीं है उसका. Similarly, the temperature that piece of iron or that piece of ice that I'm using, वो temperature जो use करेगा, जब temperature reach करेगा, वो degree Celsius में. And let's say I melt it. I'm not writing any numbers here. I just want to see the trend. So usually what happens is that the temperature rises, gets to a point where it starts becoming constant, does not change. After a while, it rises again. And then it gets to a point where it will not change again, but this time it will take longer. And then it rises again. Now, people who do this study know that when the temperature is rising, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, वो सॉलिड है. तो यहां पे भी उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, वो लिक्विड है, और यहां पे भी उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, वो गैस है. बट बिटवीन दीज टू द स्टेट चेंजेस, एंड एट दिस पॉइंट सम ऑफ इट हैज मेल्टेड एंड सम ऑफ इट इज मेल्टिंग.
So we write that S is changing to liquid and liquid is changing to solid. And this is how we write it. It's a reversible arrow. ये जो आपके पास है, ये इस तरह से होता है. It's a reversible arrow, which basically shows कि liquid solid भी बन रहा है and at the same time solid liquid भी बन रहा है. Now, Gia's question is that why at some point temperature is constant? And that is a question that was very challenging to answer for many smart people. We will get to that कि उसका answer आज हमें पता है और वो क्या है. But just bear with me. Similarly, if you do this experiment, you will see that this is what happens. Some of the liquid will boil and some of the gas will come back to become a liquid, but eventually state change hogi. But while it is happening, while the state change is happening, temperature change nahi hota. So ho kya raha hai? Dono surton mein, either the state changes or the temperature changes. You can see that both are not happening together. And that is a very confusing thing to see. Aisa kyun ho raha hai? So questions that come out of this whole experiment. It's a very simple experiment. We have all seen this. I'm sure कि हम सब ने, anytime you have had a cold beverage with ice in it, you have experienced solid changing to liquid. Anytime you have taken some steam in a nebulizer, या अगर आपने कभी भी कुछ भी boil किया है, you have experienced liquid changing to gas or gas changing to liquid. And not just that, if you have ever perspired, which we all have, then of course you have seen evaporation. You have experienced evaporation and the cooling effects of that evaporation. So questions that come out of this, an examiner will also grill you on that. First of all, simple questions, level 1. इनके नाम क्या हैं? How does the graph change? Graph draw करना है या graph को label करना है? ये बिल्कुल basic question है. Next level. How is one of these processes different from the other? Like boiling or evaporation में फर्क क्या है? If they're both liquid to gas, then what's the difference in them? Then, can you write this equation, the equilibrium equation? Usually IGCSE में इसके ऊपर ज़्यादा question आता है. O levels में वो ये equation नहीं आपसे demand करता. Next, and now this is a harder question. Why? And every time you said you get why, examiner कभी भी आपको why नहीं लिख के देता. Examiner आपसे क्या बोलेगा? जो पहले लेवल के मैंने आपको आंसर्स बताए ना, जिसमें आप बता रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. The questions of how something is or what something is. कि अच्छा liquid to solid को freezing बोलते हैं. What something is. These questions, examiner has a word for it. वो आपको बोलता है describe. और describe वाले सारे questions हम देख सकते हैं. We can see what liquid to gas changing is. It's boiling. What evaporation is. It happens at the surface of the liquid. It happens without bubbles. It happens slowly. It happens at temperatures below the boiling point. All of that is a description. Okay? That is describe. Every time examiner says describe, that's your command to write how something is, what something is. And then they drop explain. Every time they write explain, uska matlab hai bhai why? And these are the harder questions. You have to give a reason. In description, you don't give a reason. अगर वो खाली आपसे कहते हैं ना describe boiling, तो उसका मतलब है liquid changing to gas at a fixed temperature. Describe evaporation, liquid changing to gas at a temperature below the boiling point from the surface. That is a description. But explanation can be hard. And we don't have an answer for that unless we believe that these solids, liquids, and gases are made of particles. That's the only explanation that has stuck and that has withstood the test of times. कि particles होते हैं और particles के through we get explanations which are irrefutable up till now. Sure, कल को हो सकता है you get a better explanation, and that is the beauty of science कि evolve करती है ये, concepts improve करते हैं and you get better explanations. और उन explanations को हम कहते हैं theory. I told you about a term law yesterday. Law बात करता है description की. Law हमेशा बताता है कि कोई चीज कैसी है. Theory हमेशा बताती है कि कोई चीज ऐसी क्यों है. And theory is the
holy grail of science. In scientific endeavor, theory is what you're trying to get to. It's the highest honor that we can bestow on any idea. हम कहते हैं theory of evolution. ये explanation है कि सारे दुनिया के जानवर इस तरह से common क्यों हैं. क्यों मेरा DNA 99% तक एक चिंपैंजी के साथ मैच करता है. क्यों करता है भाई? मेरा और चिंपैंजी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है. या क्यों 97% तक वो जो सुबह नाश्ते में मैंने एप्पल खाया था उसके साथ मैच करता है. 97%, दैट्स अ प्रिटी बिग नंबर. और मेरा डीएनए जो मेरी आइडेंटिटी है वो उसके साथ मैच करती है. उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? थ्योरी. कौन सी? बहुत सी थ्योरीज हैं, बट द थ्योरी दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम और जो आज तक सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स जो सारी उम्र स्टडी करते हैं उसको, वो समझते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज द बेस्ट थ्योरी दैट वी हैव येट. सिमिलरली आपके पास थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है. नाउ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपली सेज दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, मास होता है, डिस्टेंस पे इफेक्ट होता है, बात खत्म. बट वो क्यों ऐसा करती हैं? वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन वो न्यूटन की भी थी, वो आइंस्टाइन की भी थी, और वो आज भी हमारे पास और भी थ्योरीज आ सकती हैं. बट सो फार वी आर वर्किंग विद द वन दैट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन. Amazing theories if you study them. Similarly, theory of relativity, probably the toughest thing that I've studied, and also a remarkable thing that we have studied. Of course, quantum mechanics and all that wo bhi uske sath hi. Well, I digress. So the theory that explains all of this, ये सारे प्रोसेस ऐसा क्यों है? ये स्टेट ऐसे क्यों चेंज होती? क्यों टेम्परेचर और स्टेट एक टाइम पे चेंज नहीं होते? या क्यों ये चीजें ऐसा बिहेव करती हैं? या क्यों सॉलिड ऐसा है और गैस ऐसी है? अभी तक हमने सब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, ये सब हम एक्सपीरियंस देख चुके हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर, एंड द वे वी विल आंसर दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. Pretty exciting. हमें जवाब मिलने लगे हैं. So before we get into that, kinetic theory क्या कहती है? It is based on one very simple idea. It says everything, in fact, let's just remove the word everything. Matter is made of particles. A simple but very powerful idea. What this says is कि जो आपको आइस नजर आ रही है वो आइस क्यूब नहीं है, वो बहुत से छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स हैं जो इकट्ठे बन के आपको आइस की फॉर्म में नजर आ रहे हैं. जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये स्क्रीन नहीं है, ये बहुत से छोटे छोटे लिक्विड क्रिस्टल्स हैं जो ग्लो कर रहे हैं. या इन अगर आप फोन पे या टैबलेट पे देख रहे हो तो एमोलेड स्क्रीन के जो भी क्रिस्टल्स होते हैं वो हैं जो ग्लो कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं आपको. जो आपके हाथ हैं वो आपके हाथ नहीं है. दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स that have combined in a very intricate shape, and they are charged by electricity through which you are using them, you're controlling them. ये सब का सब पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द, वो नहीं है जो आपको नजर आती है. वो छोटे छोटे पीसेस हैं जो बहुत स्मॉल हैं. दे आर ridiculously small and they make everything up. So it's a paradigm shift कि आप चीजों को बिल्कुल नए तरीके से आप देखें. And I want you to live it. I want you to look at something in your room right now and imagine कि वो नहीं है जो आपको नजर आ रही है. Go on, pick one thing in your room right now. वो छोटे छोटे particles हैं जिनके मिलने से वो ऐसी है. Take a minute. Are you focusing on something? Meher, what are you looking at? Have you picked an object? Sir, I'm looking at my pencil right now. Okay, your pencil. Aina, have you picked up an object? I'm looking at a candle. Okay, a candle. Okay, so imagine that candle is just very small wax particles. And those small wax pieces
are in fact made of even smaller carbon and sulfur and I don't know, so many small beads. Just imagine them as cotton balls. एक cloud की तरह की चीज है जो stacked है एक दूसरे के ऊपर, and that is showing itself as that candle. Meher, the pencil you're looking at is just different kinds of those particles. उसमें वो काले रंग का जो उसका सिक्का है, the lead that you have in it, that is a particular kind of that cloud. And the wood around is, that is another kind of cloud. और वो सारे के सारे fused together हैं through very strong forces. And they are showing themselves in a way कि आप उसको use कर सकते हो. And when you rub that pencil on a paper, you're not drawing a line. You're actually depositing 50, 60,000 of those particles on the paper, जो आपको वो नजर आते हैं. Now, what do these particles do? Kinetic theory says, and this is where it gets really weird. Particles are in constant random motion. What? The particles that you're looking at, वो जो candle है ना, उसके अंदर वो move कर रहे हैं बहुत जल्दी में. Let's say there are particles that you cannot see, the air that you breathe. वो air के अंदर जो particles हैं, they are in constant random motion. बहुत तेजी से वो move कर रहे हैं, rapidly एक दूसरे के साथ hit कर रहे हैं. ये पाकिस्तान की ट्रैफिक की तरह चल रहे हैं. They're constantly moving randomly. कोई उनका सर पैर नहीं है, कोई उनकी डायरेक्शन नहीं है. They're just constantly doing that. And lastly, particles have forces of attraction between them which are affected by distances between them. The theory paints a picture for us. जो आपके सामने हवा है वो इनविजिबल है लेकिन उसमें छोटे छोटे पीसेस हैं. Look at them and imagine that they are moving around randomly at very high speeds. And when two of them close together, they experience an attraction. वो एक दूसरे के साथ stick करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी तेजी से आ रहे होते हैं कि वो collide करते हैं और आगे निकल जाते हैं. But the closer they are, the more they attract each other. And the further away they are, the less they attract each other. So they're going to stick close together अगर वो एक जगह पे पास पास आ गए. और अगर उनको आप slow कर देंगे तो वो stick भी करेंगे. और अगर आप उनको तेज कर देंगे, if they're moving really fast, तो वो एक दूसरे से collide भी करेंगे, रुक नहीं पाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, attraction नहीं रहेगी उनमें. And the phone or the laptop or iPad, whatever you're looking at, उसके अंदर जो particles हैं जो escape नहीं कर पाते. They are so close together, the distances are so small कि अब उनकी force of attraction इतनी strong है कि no matter what they do, they're unable to escape and they're just sticking there, just trying their way to get out of these forces holding on to them. वो shackled हैं वहां पे particles and they cannot escape unless they move. And the movement comes from kinetic energy. That's where we get the word kinetic. The movement depends on kinetic energy. So the key words here are kinetic energy, the forces of attraction, and the distances. Everything around you and everything that's matter can be explained in terms of these three keywords. उसका behavior. जितने सवाल डिस्क्रिप्शन के हमने देखे गए, लिक्विड क्यों सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड क्यों गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों टेम्परेचर चेंज होते हुए स्टेट चेंज नहीं होती, व्हाई इज इट दैट नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स कर दो तो वॉल्यूम ऑफ गैस फिक्स हो जाती है, व्हाई इज इट दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम इफ दे आर कांस्टेंट, इफ दे आर inversely related to each other, why is it that solid has a fixed shape and gas has flows and density of solid is high? All of that
is because of these three words. And we will try to answer that. Let's see. Let's get started. Any questions so far? Does everybody understand kinetic theory and the three main important ideas there? Okay, I'll take that as no questions. But if you have any questions, feel free to unmute and ask. So let's get started. Starting from the very top, states of matter. Solid की shape fix क्यों होती है? उसकी वजह ये कि solid के particles बहुत strongly close together होते हैं, और जब वो close together होते हैं, forces don't allow them to move along. जब वो move ही नहीं करेंगे, वो दूर जा ही नहीं पाएंगे, तो shape कैसे बदलेंगे? Shape is the outline of those particles, and if they're not moving, the outline stays fixed, and that's why they have a fixed shape. Why is it that they have a fixed volume? The volume comes from how far away the particles are. In solid, the distances are really, really small. You can't really change them much. Which means if the distances are constant, अगर वो एक ही distance पे बैठे हैं, तो वो दूर जा ही नहीं पाएंगे या पास आ ही नहीं पाएंगे, and that means volume will roughly stay the same. And that's the case in liquids. But in gases, particles are really far away. And because of that far distances, that high distances, they can come close to each other. And they can be closer or further away. And that will affect the volume. In fact, the key difference between solid, liquid, and gas is just कि particles कितनी दूर हैं. अगर बहुत पास हैं तो solid बन जाएगा, दूर है तो gas बन जाएगा. और इस सब को करने के लिए उनको चाहिए एक चीज, kinetic energy. They get that kinetic energy and they do whatever they need to do with this change of state. Why do particles in gas flow? They flow because they are free to move around. जब वो move करते हैं तो उनको कोई दूसरा particle hold on नहीं कर रहा होता, तो एक particle आगे चले जाएगा, दूसरा वहीं पे पड़ा रहेगा. And that is what flowing is. Flowing is spreading out without breaking down. So ये gas में ये हो सकता है, liquid में ये हो सकता है, क्योंकि distances थोड़े बहुत बदल सकते हैं. But in solids, if you throw a pencil, you are not letting it flow. You just throw it away. All that happens is कि अगर उसका एक particle आगे जाएगा तो बाकी particles उसके साथ साथ आगे जाएंगे, because they are being attracted by that. Why is it that you can compress a gas? You can compress a gas because the distances again are really large. So if you bring them close together, you're compressing it. Okay. Gas laws. Why is it that Boyles law works? For that, let's see कि particles pressure feel करते हैं? नहीं. Particles की volume होती है? We say it's negligible. बहुत थोड़ी सी होती, तो तकरीबन समझे नहीं होती. तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम का पार्टिकल से क्या ताल्लुक है? प्रेशर उस सब्सटेंस का है, उस गैस का है. ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा, ऑक्सीजन की वॉल्यूम होगी, ऑक्सीजन की टेम्परेचर होगा, उसके पार्टिकल्स का नहीं होगा. उसके पार्टिकल्स का क्या होगा? द पार्टिकल इज गोइंग टू हैव कोलिजन्स. जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा. वॉल्यूम उस चीज की होती है, पार्टिकल का क्या होता है? डिस्टेंस. पार्टिकल्स पास हैं, वॉल्यूम कम है, पार्टिकल्स दूर हैं, डिस्टेंस ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है. टेम्परेचर इज ऑफ द सब्सटेंस, नॉट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स का क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी. पावरफुल आइडियाज. टेम्परेचर, जब आप कहते हो ना कि कोई चीज हॉट है, यू आर नॉट टेलिंग मी दैट द पार्टिकल्स आर हॉट. वो तो हॉट कोल्ड हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ मूव करते हैं ज्यादा या स्लो. अगर वो तेज से मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, द थिंग विल अपीयर टू बी हॉट. अगर वो स्लोली मूव कर रहे हैं, द थिंग विल अपीयर टू बी कोल्ड. सो व्हेन यू टेक अ हॉट कप ऑफ, लेट्स से आप एक हॉट चॉकलेट ले लेते हो, या यू टेक अ कप ऑफ कॉफी,
and it's hot, then all that's happening is that the water molecules inside, the chocolate, cocoa particles inside, whatever is inside, the sugar particles, they are just moving around really, really fast. ठीक है? And then वो particles हैं और वहां पे they are moving really fast, and then slowly they stop losing that energy. They start losing that energy. And when they slow down, अब वो slowly जब move करते हैं, तो it appears to lose its heat. It appears to get colder and colder and colder. So जब वो warm है, तो वो जो चाय है या वो जो कॉफी है या जो भी आप चीज ले रहे हैं जो hot है, then all that's happening is कि वो particles हैं और वहां पे उनकी party हो रही है. They're moving really fast. But then if they slow down, that simply means that they're losing that kinetic energy. तो आपको वो कैसे फील होता है कि उसका टेम्परेचर कम हो गया. इसी तरह पार्टिकल्स अगर बहुत दूर दूर चले जाते हैं तो उनके डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, तो यू सी दैट एज वॉल्यूम चेंजिंग. कहां पे चेंज करते हुए देखते हो आप? वी सी इट when you inflate anything, you inflate a balloon, you inflate a car tire, वो जो भी चीज है वो जब inflate करते हो, आप bread बनाते हो, उस bread में you inflate the bread dough. So all that's happening is that the particles of gas inside are going further away from each other, and that is how you see कि वो ये चीज blow up कर रही है. And that's just the distances of how far the particles are. Similarly, when the pressure is high, that simply means particles are colliding more. So let me explain how Boyles law will work at the particle level. So let's take that. My independent variable is volume. So if I increase the volume, remember volume उस चीज की है, उसके particle की नहीं. So if I increase the volume, तो particle का क्या increase किया मैंने? Sir, the distances between the particles. The distances between particles. Very good. So when I increase the volume, I increase the distance between particles. And that means if they are further away, तो वो collide तो नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि collision के लिए तो पास आना पड़ेगा. If they're further away, that means collisions go down. And as the number of collisions goes down, the pressure of the particles goes down. Or pressure of the substance goes down, of the gas. Okay? Let's take the next one. Charles law. Charles law कहते हैं pressure is directly relational to temperature. Let's try to explain it. Okay. Unes, would you take a guess? So if I increase the temperature, what am I changing of the particle? Unes, are you there? Sir, the kinetic energy will increase. Kinetic energy of particles. Very good. That means particles are moving. So if I increase the temperature, I make them move more. If they move faster, they collide more. And if they collide more, pressure goes up. Remember, in this case, my control variable is volume. मैं उनको ज़्यादा दूर नहीं जाने दे रहा. उनका जो distance है मैंने उतना ही रखा है, बस उतने ही एरिया में उनको रख के तेजी से मूव करवा रहा हूँ. तो collision ज़्यादा ही होंगी ना. मतलब आप एक ही let's suppose एरिया ले लो और उसमें आप ट्रैफिक तेज कर दो, तो collisions भी ज़्यादा हो जाएंगे, accidents भी ज़्यादा हो जाएंगे. That's exactly what's happening here. You're increasing the kinetic energy, which means they move more, they collide more, the pressure is higher. Let's take the Gay-Lussac's law. Volume is directly related to temperature. Go on. Can anybody attempt this? Aliza, what do you think? So when you increase the temperature, you're increasing the kinetic energy. You're making them move more. But अगर आप उनको collide नहीं करने देते, तो फिर वो कैसे आप avoid करेंगे collisions? By helping them move further away. कि वो तेज move कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी दूर हों कि उनकी collisions change नहीं हो. That is volume. कि वो distances उनके बढ़ा दो आप. So if they move more, that means they go further away as well, provided they don't collide as often. So उसका मतलब हुआ कि pressure constant है और temperature बढ़ाने से volume भी बढ़ रहा है. And last one, Avogadro's law, we talked about it yesterday, कि particles अगर ज़्यादा होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर ज़्यादा जाएंगे, जिसका मतलब है volume भी ज़्यादा होगा. Now, if you fix any one of them, मैं उनकी kinetic energy fix कर देता हूँ और फिर मैं उनका distance भी fix कर देता हूँ, तो pressure भी automatically fix हो जाएगा.
So you take any two things, you fix them, the third one automatically gets fixed. And that is how you explain gas behavior. And that brings me to change of state. And that is something I will leave to you and your imagination. Think about it over the weekend. And in my next class, we will talk about how this happens and why is it that when you heat something, either the temperature changes or the state changes, or why exactly does a solid change to a liquid? Like, why does it do that? You're just heating it. Ye liquid kyun ban gaya? Solid kyun nahi raha? We'll talk about that in our next class. Any questions? No, sir. All right. Take care. See you in the next class. You have a test tomorrow of states of matter. So on this gas laws and all that. So you'll get the test and just attempt it, send it to me or to the other official जो number है हमारा. And वो फिर मैं check करके आपको उसका respond कर दूंगा कि आपने क्या बेहतर किया, क्या गलत किया and all that. And I'll obviously share the solution of that test later on with you as well. Okay, good luck. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.